पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, ये है वो कंपनी जिससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं। 1983 में ये कंपनी बनी थी। ऑटोमोबाइल डीलरशिप का करती है कारोबार, नई और पुरानी गाड़ियों की बिक्री करती है, सर्विस रिपेयरिंग और स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी का कारोबार है। और कंपनी के 4 राज्यों में 61 से ज़्यादा शोरूम है और लगभग 140 सर्विस सेंटर्स हैं। पहले इशू की जानकारी आपको दे दूँ, 12 से 14 मार्च ये है इशू की तारीख, यानी कि कल खुलेगा, 14 तारीख को होगा बंद। लोट साइज़ 50 शेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश इशू है 250 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 350 करोड़ का, कुल मिलाकर 600 करोड़ का इशू है। मार्केट कैप होगा 2100 करोड़ का। ये है कंपनी के इशू की डिटेल्स। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। एक तो है नवीन फिलिप साहब जो कंपनी के एमडी हैं और कालीकट यूनिवर्सिटी से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से सर ने पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट डिग्री हासिल की है। इंडस्ट्री में करीबन 26 साल से ज़्यादा का अनुभव आप रखते हैं। और फाड़ा जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की गवर्निंग बॉडी है और बड़ी लीडिंग बॉडी है, उसकी गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं। एक और ख़ास मेहमान है हमारे साथ जॉन वर्गीस साहब जो कंपनी के CFO हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, कालीकट यूनिवर्सिटी से आपने कालीकट में एक IIM अहमदाबाद भी है, IIM भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, मैं अभी कुछ समय पहले आया था वहाँ पर। अच्छा, वहाँ मेरी एक स्पीच थी और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा लश ग्रीन एकदम। और पूरा केरला ऐसा ही है। शहर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल, जहाँ वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे, बिल्कुल वो जगह भी मैं देख के आया था। यस, बिल्कुल। तो बहुत ही, तो आप बेसिकली कालीकट से ही? नहीं, त्रिचूर से है हमारा, केरल में ही। जी हाँ, पढ़ाई कालीकट यूनिवर्सिटी से की आपने। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले सर, नवीन सर समझाएं जरा, आपकी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है आपका? तो हमारा डीलरशिप बिजनेस मॉडल है। सो वी रिप्रेजेंट अबाउट। सर, एक चीज़ आप दोनों बात करें उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपको अगर हिंदी बोलने में मुश्किल हो, आप आराम से अंग्रेजी बोलिए, बी कंफर्टेबल। जहाँ भी वेयर एवर यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश, नो वरीज सर। So we basically a dealership business. 84 we started with Maruti. Much before that we were a spare parts retailer. So we had offices across. So today we handle Maruti, which is one of our largest OEMs. We have Jaguar Land Rover in terms of the passenger car space and Honda. So these three in the passenger car space. In terms of commercial vehicle space, we have Tata Motors, which is our largest. We started in 97 with them. We're present in a couple of states with Tata Motors. Bharat Benz is there. And in the 2-wheeler and 3-wheeler EV space, electric space में Ather और Piaggio है. So other than this, we distribute spare parts for various OEMs. Maruti, Tata Passenger Car, Tata Commercial Vehicles, Ashok Leyland, JCB, all that in 2 states of. So like typical distributor जो होते हैं, डीलर्स जो होते हैं, 2 काम है, एक गाड़ी बेचने का, सेल्स और सर्विस करना, सर्विस, वो दोनों आप करते हैं। Absolutely. For different automobile manufacturing. Perfect, sir. So our focus is that we are concentrating on service in a big way. So last year we did close to 1 million vehicles in service. Okay. Though we sold only about 48,000 new vehicles and 12,000 used vehicles, we did 1 million vehicles, 9,50,000 odd vehicles in service. अच्छा, so that's our गाड़ी 50,000 ही बेची, लेकिन 10 लाख गाड़ी का सर्विसिंग किया। सो सर्विसिंग वो कई बार हम सुनते भी है, वैसे तो आपका ट्रेड सीक्रेट है, आई डोंट नो, आप बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन हमको है ना ऐसा सुनने में आता है कि जब आप गाड़ी बेचते तो उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन असली मार्जिन सर मलाई उधर है। सही है सर? Each industry would have its own thing, but yes, service is the key for the. And if you give better service, of course, why not? And that is our focus area. Absolutely. John sir, issue is 250 crores fresh issue, right? जो पैसा कंपनी के पास आएगा, right? So how do you think? I mean, कैसे आप उसको यूज़ करने वाले हैं? इसमें से 192 crores will be going to repay our debts. Okay. Balance will be for general corporate purposes. So after that, debt would be zero, or how it is? Not really. So in our industry, हम लोग industry में, as Naveen sir was saying, that we purchase vehicles, we keep inventory for our OEMs. So typically अभी 25-30 दिन का inventory हम लोग रखते हैं. So उसके हिसाब से हम लोग का so about 75% of our loans are on inventory funding. Okay. So it gives you an idea as to what is the kind of sales that will happen in the future, in the next one or 2 months. So that's what the aspect. So it goes to about 35 to 40% of our debts would be repaid
by this fresh issue. सो मेनली आपका पैसा इन्वेस्ट पार्ट्स वगैरह उसकी इन्वेंट्री रखने में जा रहा है, नॉट कि शोरूम खोलने में बड़ा पैसा लग रहा हो, नॉट लाइक दैट. नो, उसमें भी पैसा हम लोग when you open a new showroom, typically एक सर्विस सेंटर, ऑर्गेनिक सर्विस सेंटर जब खुलते हैं करीबन 3.5 to 4 crores का खर्चा होता है. ओके. सो हम लोग नॉर्मली एक फाइनेंशियल एक IRR कैलकुलेट करते हैं जिसमें नॉर्मली वी गेट अ प्रोजेक्ट IRR of over 35%, which percolates to about payback of within 3 years time. नवीन सर, बैनियन ट्री आपका जो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर 2015 में आया था, राइट? 2015 December. सो दे आर सेलिंग स्टेक इन दिस IPO. Yeah, 20% they have a 30% stake. 20% they will exit in this IPO. So why so? Any specific reason for that? Just to So normally most private equity funds have a term of about 6 to 7 years. But Banyan Tree has been with us for 9 years. So they actually wanted to continue, and which is why they're holding a 10% also. Yeah. That's Okay. So it's just like yeah. So 9 years, like any fund, I'm saying. Actually, just before IPO, there's some waiver termination agreement with them, and they transfer some 3.7% stake. What exactly is that? So we had, even if you look at our DRHP which we had filed and the UDRHP and RHP, we have given the details of this. So basically there was an upside arrangement with Banyan Tree. So the promoters and Banyan Tree, when Banyan Tree invested, we also thought that when we do the delivery of, in terms of profitability and growth, everything, there would be an upside sharing with them. So that upside sharing, under the new norms, they can't gift those shares to us. We have to buy those shares at a book value of it, which is what is that. Absolutely. John sir, जो last 3 years data मेरे पास में FY21 to FY23 and half of FY24, revenue growth is impressive. आपका EBITDA वगैरह सब प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है. 2 चीज़ इसमें मुझे पूछनी. एक, मार्जिन आपका स्टेबल है 4.5% का. सो दिस इज द फिनोमिना. यही मार्जिन जनरली कंपनी के लिए एक ट्रेंड है कि नियर 4.5% मार्जिन रहेंगे? No, this is going to be on the improvements. It can be improved. Because as Naveen was mentioning, हम लोग का फोकस सर्विस में है, और सर्विस में, as you correctly said, more than 55% of the EBITDA of the group comes from service. वैसे सर्विस टॉप लाइन में contributes to hardly 15%, लेकिन बॉटम लाइन में more than 50% of the bottom line comes from servicing. एंड वहाँ पर हम लोग का फोकस है, वहाँ पर हम लोग का मोट है, क्योंकि 40 साल से हम लोग मारुति के साथ जो है, we were the first dealers along with Maruti to set up shop in India. अच्छा. We have built up that kind of a skill, whether you call it the technical skills of the painters, tinkers, service advisors, mechanics, वो that cannot be easily replicated by other dealerships. So इसमें हम लोग को this is where we are focusing on. Last 3 years, maybe at least per year about 7 to 8 new service centers we have established. Plus on top of that, inorganic growth. So definitely, apna EBITDA margins will be improving. Just to give you some figures, pre-COVID and post-COVID, FY19 versus FY23, हम लोग का top line as a company grew by 6%. CAGR. लेकिन इसमें service component grew by 15%. EBITDA likewise, group level 13% CAGR था, लेकिन service alone is 25% CAGR. Okay. So EBITDA, that is one is of course the service का portion is growing up in our whole pie. More importantly, service में ही अपना जो EBITDA margin जो है 13% से 19% EBITDA margin हुआ है. So productivity has improved. जो जॉन सर कह रहे हैं उस पर एक मुझे सवाल पूछा. Say you said like you sold 50,000 odd vehicles, okay? लेकिन आपके पास सर्विसिंग के लिए 10 लाख व्हीकल आ रहे हैं. जनरली जैसे मैंने जहाँ से गाड़ी खरीदी है, मैं सर्विसिंग के लिए भी उसी के पास भेजता हूँ, करेक्ट? सो देयर मस्ट बी फ्यू अदर कस्टमर्स कमिंग टू अस. थोड़े एग्जिस्टिंग होंगे आपके, थोड़े कुछ दूसरे भी आ रहे हैं. सो ऐसा क्या मोट है आपका कि लोग गाड़ी कहीं और से खरीद रहे हैं, सर्विसिंग आपसे करवा रहे हैं? No, so we do a whole lot, as John said, in most of the skill competitions done by all OEMs. It is Popular Vehicles and Services or all our subsidiaries that win those skill level competitions. So one is in terms of skill of repair. 2 is in terms of the marketing efforts that we put in for service and the sort of confidence that we build up in the customer. So there are a whole lot of things that we do to ensure that the customer, not only us, but others are also retained by us, which is why we are at 20 times the number of vehicles that we sell, we service. So popular is very popular among customers. Absolutely. And making us the largest service dealer in most of our OEMs, including Maruti. Lovely. अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, in this first 6 months,
हाउ मेनी मोर शोरूम्स यू हैव ओपन एंड लास्ट ईयर में कितना और खोला है? नंबर ऑफ शोरूम्स और सर्विस सेंटर, व्हाट यू कॉल सर्विस सेंटर्स हर साल हम लोग 7 to 8 सर्विस सेंटर्स खोलते हैं. Okay. That continues the current year also. One above that, of course, whenever there's an inorganic growth, जब होता है, that adds on to it. Last year हम लोग भारत बेंज डीलरशिप लिया. वहाँ पर महाराष्ट्र में हम लोग first time we entered into Maharashtra last year in February, wherein we took nearly about 8-9 service centers and 2 sales showrooms, covering the Nagpur and Aurangabad regions. So 70% of your revenue is from Kerala, right, sir? Right now, it's about 70%. 70%, right? So अभी केरला में नेचुरली, अब आप केरला में तो पॉपुलर सब जगह होगा सर, राइट? केरला इज अ comparatively smaller state than probably other states. So अभी growth कैसे आएगा फिर कंपनी का? So both geographical growth and in terms of each state that we enter, grow in depth in those states. So Maruti has just given us the LOI for Karnataka. Okay. We'll be opening up Bangalore very soon. Okay. So like that, we'll be moving up and we'll look at acquiring opportunities everywhere. So that's also there. Okay. So both geographical, like he said, we have moved into Maharashtra. So Karnataka, Maharashtra, next target. Yeah, and Tamil Nadu, we are already there. Okay. So Tamil Nadu also will grow. in that. जहाँ पर सर्विस पोटेंशियल ज़्यादा है, उसी स्टेट्स में हम लोग we want to enter. And how do you decide कहाँ सर्विस पोटेंशियल है सर? So in terms of number of vehicles per 1,000 people, so if you look at Kerala, and people keep asking why Kerala, but Kerala is actually double the national average in terms of number of vehicles. Oh, so 50 गाड़ी है हर 1,000 लोग के लिए. अच्छा. All India is 25. Okay. So the other states that have very high potential is Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, Maharashtra, Gujarat, NCR region. Okay. So we look at those areas also. हाँ, सो वहाँ सर्विस रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती होगी. और सपोज मैंने गाड़ी भेज दी कहीं सर्विस सेंटर में, पता चला 20 दिन में आ रही, तो वहाँ पे अगर आपने वही काम 7 दिन में कर दिया, तो देन Yeah, that's true. गॉट. We are using technology to a lot of extent in service. Wherein इसमें कहाँ टेक्नोलॉजी यूज होती है सर? we are very transparent with our customers, wherein they know, you say you give a vehicle, or then वापस आएगा, we are not aware. So what happens in between? But we kind of keep them updated on what Regular happens. updates go. हाँ, मतलब क्या आपका व्हीकल कहाँ है, क्या कंडीशन में, कब तक थी, ये सब बताते हैं? Yeah, yeah. सर ग्रेट है आप. मतलब हम फोन लगा लगा के थक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कब. मुंबई. अरे सर पूछिए बात. और वो भी स्पेशली अगर मानसून में गाड़ी आपकी खराब हो गई हमारे मुंबई में, तो भगवान ही We have pickup services, drop services, home delivery, everything we have. सरप्राइजिंग सर. मतलब इसी जनरली ऑन द फेस ऑफ इट आपको सुन के कैसा लगता है? यार ठीक है ना, एक डीलरशिप वाला बिजनेस है, क्या बड़ी चीज़ है, मतलब कोई भी थोड़े ज़्यादा शोरूम खोल दिए, बट you can make it in a corporate structure. Yeah. So if you look at various other countries, for example, US, there are at least about 7 or 8 dealership entities that are listed in US. The largest one being AutoNation, which has got a turnover of about $26 billion. And the listing is, I mean, market cap is also very high. They sell approximately 3 lakh vehicles. So 300,000. Our sales is 50,000. So as India grows, the scope for large dealers to come on board. So now we'll be the second dealer that will be listed. Landmark is listed. Yes. Popular will be the second dealer that will be listed. There'll be a lot more large groups that will be coming forward with, which has happened across the world. So it is just a matter of time. Lovely. सर मज़ा आया आपसे बात करके. देयर सो मच इनसाइट वी गॉट इनटू योर बिजनेस एक्चुअली, विच वी डिडंट नो अर्लियर एक्चुअली, हमें लगा. बट आप दोनों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारा डिटेल्स बताया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you. और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका IPO कल से खुल रहा है. हमारी बेस्ट विशेज़. उम्मीद करते हैं कि आपका IPO सुपर डुपर हिट, सक्सेसफुल, और आपके नाम की तरह इन्वेस्टर्स में पॉपुलर हो. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Thank you.